Good morning. There is a notice for all the Martians, first year students. Such YouTube video classes or live video classes after this week will stop for puja vacation, and then perhaps in March first week, in November first week, November 1st or 2nd, 1st November or 2nd November, according to government guideline, there will be a chance for the reopening of our hostel and tutorial. So then in November we will take class in normal classroom in your presence. Till now, after this week, the online classes will be suspended. কথা রিমাইন্ড করতে দেখো, এই উইক পরে পূজা ভ্যাকেশন পাই অক্টোবর 22 রু অক্টোবর 30 যায় অনলাইন ক্লাস বাই ভিডিও ক্লাস यूट्यूब ক্লাস বন্ধ রহিব। গভর্নমেন্টর গাইডলাইন অনুসারে নভেম্বর 1st রু मैक्सिमम चांस अच्छी ट्यूटोरियल ओपन हम, हॉस्टेल ओपन हम, कॉलेज भी खुलीज। तो सेबेठू आम पुणी रेगुलर क्लास करवा। जहाँ पढ़ा जाए जो ऑनलाइन क्लास रे हो कि जो यूट्यूब लिंक रे हो, जहाँ पढ़ाई पुणी आम रिव्यू पुणी तुमको रिव्यू करेबू और तुम डाउट आम निश्चित नबू। एवं जी पढ़ागला ये वीक एंड पर्यटन जहाँ पढ़ागला मैथ्र दुईटा मिनिमम 2टा एक्सरसाइज कि 3टा एक्सरसाइज पढ़ा तुम अच्छी। फिजिक्स गोटे विषय गोटे सब्जेक्ट गोटे चैप्टर कंप्लीट होगी आउ गोटे चैप्टर निश्चित पढ़ा जीवो। केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन क्लास जीवो। जहाँ पढ़ा जीवो ताको तुम पढ़। नवेम्बर 1st रु आम पुणी नॉर्मल क्लासरूम क्लास जो क्लासरूम टीचिंग स्टार्ट करवा। तो सेते पर्यंत अक्टोबर 22 रु माने नेक्स्ट वीक रु पूजा वैकेशन कंटिन्यू करिवो 10 दिन। तापर पुणी नवेम्बर जदि तुम हॉस्टेल न खुले आम पुणी क्लास करूँ आहरी बहुत क्लास नबू। जदि न खुले किंतु 100% आशा अच्छी निश्चित खुल ना कि ना हॉस्टेल खुल हॉस्टेल तुम रही पाठ पढ़े। दैट्स ऑल। एवं आस टॉपिक को इन माय लास्ट क्लास आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। तो मुझे रिमाइंड कर दूसरी मो लास्ट क्लास रे मु 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय R.H. Whitaker. In 5 किंगडम classification, which is most accepted classification system till now, all the prokaryotes belong to kingdom Monera. So let us discuss kingdom Monera. Okay? So in my today class I will discuss with you about kingdom Monera. So mono means one. Monera means unicellular organisms. The term Monera was introduced by Neil and Steiner. Remember, Neil and Steiner introduced the term Monera. Monera term was introduced by Neil and Steiner. Here a question may arise, what is Monera? Answer is Monera is a kingdom. Monera is a kingdom of prokaryotes. यदि कई प्रश्न करे व्हाट इज मोनेरा, मोनेरार लिटरल मीनिंग है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशी जीव। तो यदि कई प्रश्न करे व्हाट इज मोनेरा, आंसर इज मोनेरा इज ए किंगडम। मोनेरा इज ए किंगडम व्हिच इंक्लूड्स all the prokaryotic organisms such as all bacteria, all blue green algae and mycoplasma. Mycoplasma is the smallest unicellular organism of the world. Its other name is Pleuropneumonia like organism. ता विषय तुमको डिटेल्स में कहबे। तो किंगडम मोनेरा is the ancient kingdom.
is the kingdom of ancient organisms. Monera kingdom is the kingdom of most primitive, means adim organisms. It includes all the unicellular prokaryotes. So let us discuss general characters of kingdom Monera. Let us discuss general characters of kingdom Monera. Listen to me. Kingdom Monera includes all the unicellular prokaryotic organisms such as bacteria, blue green algae and mycoplasma. These three members are only these three members are members of this kingdom, not any other organism. এই তিন প্রকার অর্গানিজম এমানে সব প্রোকারিওটিক অর্গানিজমস মিন্স প্রাকন্যষ্টীয় জীব, সো দে বিলং টু কিংডম মনেরা. General character of kingdom Monera is the members of kingdom Monera are unicellular and prokaryotes. Do you know prokaryotes? Listen me. Living organism body composed of little room-like unit called cell. Okay, cell is of two different types. Living organism body लिटिल रूम लाइक यूनिट द्वारा गठित. प्रति लिटिल रूम लाइक यूनिट को कहते सेल. सेल इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल. यू मीन्स ट्रू, कार्योन मीन्स न्यूक्लियस. यू मीन्स ट्रू, कार्योन मीन्स न्यूक्लियस. This cell which has a true nucleus. Remember, nucleus is the part of a cell where genetic materials present, gene presents. Nucleus is the part of a cell which contains all the genes or genetic materials is known as a nucleus or carrion. In Odia, न्यष्टि. सेल रो जो पोर्शन ले जेनेटिक मटेरियल बा डीएनए अछि सेही पोर्शन को कहंदी न्यूक्लियस. ओके, then this cell which has a well organized nucleus, this cell which has a well organized nucleus, that means this cell whose nucleus has a nuclear membrane, nucleolus, whose nucleus contains DNA which associated with the protein to form chromosome is known as eukaryotic cell. Remind this cell. तो रिपीट कर सुनो. दिस सेल व्हिच हैज अ ट्रू न्यूक्लियस. जो सेल रो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस अछि, त माने जो सेल रो न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अछि, न्यूक्लियोलस अछि. न्यूक्लियस भितर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन मिसी कि क्रोमोसोम हे जंदी, से सेल को कहंदी यूकारियोटिक सेल. दिस सेल व्हिच हैज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, दैट मींस दिस सेल व्हिच न्यूक्लियस हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, व्हिच न्यूक्लियस हैज अ न्यूक्लियोलस, व्हिच न्यूक्लियस contains well organized chromosomes is known as eukaryotic cell. In eukaryotic cell, DNA and histone proteins form chromosomes. DNA and histone proteins organize to form thread-like structures. These thread-like structures are known as chromosomes. तो जो सेल रो न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अछि, न्यूक्लियोलस अछि, न्यूक्लियस भितर थिबा डीएनए गुडी को हिस्टोन प्रोटीन सहित मिसी कि क्रोमोसोम हे जंदी, से सेल को कहंदी यूकारियोटिक सेल. ओके, देन दिस सेल व्हिच न्यूक्लियस इज incipient type. This cell whose nucleus is incipient type, that means this cell whose nucleus contains only naked DNA. DNA is naked. DNA is not associated with the histone protein to form chromosome. This cell whose nucleus is only represented by naked histone free DNA and there is no nuclear membrane and nucleolus. जो सेल न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही, न्यूक्लियोलस नाही, डीएनए गुडी को हिस्टोन प्रोटीन सहित मिसी कि क्रोमोसोम हे नाथि, डीएनए गुडी को नेकेडली अछन, खुला अछन. नेकेड डीएनए केवल अछि, जो डीएनए गुडी को जीन जेनेटिक मटेरियल. जो सेल न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाही, न्यूक्लियोलस नाही, ताको कहंदी प्रोकार्योटिक सेल. प्रोकार्योटिक सेल. ओके, फर्दर देखो. प्रोकार्योटिक सेल हैज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. Membrane bound organelles means, listen to me, it is cell, the total living liquid of cell is called protoplasm. Protoplasm in Odia adi jibo ko. Protoplasm is of two different types. The protoplasm present inside the nucleus is called a nucleoplasm. The protoplasm present outside the nucleus is called cytoplasm.
तो साइटोप्लाज्म bears a number of living objects. Such living objects are known as cell organelles. The cell organelle which has membranous covering. जो cell organelle लो membran लो covering अछि ए जे mitochondria, plastid, Golgi bodies. These organelles have membranous covering. जो cell organelle रो membran रो covering अछि. Membran means thin covering. In Odia झिल्ली. Thin covering is called membran. तो देखो सेल रो ये सेल भीतर थिबा लिविंग लिक्विड को कहंदी प्रोटोप्लाज्म. जो प्रोटोप्लाज्म दा न्यूक्लियस रो भीतर अछि न्यूक्लियोप्लाज्म. जो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस बाहर अछि ताको कहंदी साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म रो थिबा लिविंग ऑब्जेक्ट को कहंदी सेल ऑर्गेनेल. जो सेल ऑर्गेनेल रो मेम्ब्रान बा झिल्ली रो कवरिंग अछि मेम्ब्रान रो कवरिंग अछि ताको कहंदी मेम्ब्रान बाउंड ऑर्गेनेल. जो ऑर्गेनेल रो मेम्ब्रान रो कवरिंग नाही ताको कहंदी नॉन मेम्ब्रानस ऑर्गेनेल. नॉन मेम्ब्रानस ऑर्गेनेल हला राइबोसोम. Ribosome is a small solid particle composed of RNA and protein. It helps in protein synthesis. Ribosome is the smallest organelle of cell. Ribosome has no membranous covering. तो जो organelle रो membranous covering अछि, जो organelle रो membran रो covering अछि, सेमान को membran bound organelle. ए जे देखो सेल रो माइटोकॉन्ड्रिया रो डबल मेम्ब्रान रो कवरिंग, प्लास्टिड रो डबल मेम्ब्रान रो कवरिंग, गोल्गी बॉडीज रो कवरिंग, लाइसोसोम रो मेम्ब्रानस कवरिंग. तो दीज आर मेम्ब्रान बाउंड organelles. Mitochondria, plastid, Golgi bodies, endoplasmic reticulum. These are membrane bound organelles are only present in eukaryotic cell and are absent in prokaryotic cell. Prokaryotic cell only bears one type of organelle, that is ribosome. Ribosome is a common organelle of both prokaryotic and eukaryotic cell. Ribosome is found both in prokaryotic cell and also in eukaryotic cell. Ribosome is the smallest organelle of cell. Ribosome is non-membranous. Ribosome रो कोनोसी membrane रो covering नहीं. It is a solid particle. Ribosome is a solid particle composed of RNA and protein and helps in protein synthesis. Ribosome is found in both prokaryotic cell and eukaryotic cell. Only ribosome is an organelle which is common both for prokaryotic and eukaryotic cell. Ribosome उभय cell common अछि. Prokaryotic cell रो भी अछि eukaryotic cell रो अछि. Ribosome is the smallest organelle of cell. Then besides ribosome, eukaryotic cell contains a number of membrane bound organelles. Eukaryotic cell देखो अनेक membrane द्वारा bound हेतिबा organelle mitochondria, plastid, Golgi bodies are present, but these are absent in prokaryotic cell. Okay? Then cell has an appendage. In some cells appendages are found. These are called flagella if they are larger in size. When these are smaller in size are called cilia. Cell रो एमदी बाहर को बाहर थिबा appendage माने बाहु cell रो एमदी बाहर थिबा hair like projection ताको कोंदी flagellum. In singular form, plural form रे flagella. Cell रो बाहर थिबा hair like structure को कोंदी flagella. In plural form, singular form flagellum. Small flagellum is known as cilium. Cilium. Okay? Then देखो prokaryotic cell रो flagellum composed of only one protein thread called protein fibril, but eukaryotic cell flagellum composed of 11 fibrils. Let it is the flagellum of eukaryotic cell. Flagellum is a thread like process of cell. Cell रो बाहर थिबा hair like बा thread like बाहु बा appendage को कहंदी flagellum. Cell रो बाहर थिबा hair like appendage को कहंदी flagellum. In plural form flagella. Flagella is the appendage means bahu of cell. Flagella help in locomotion or chalana prakriya of cell. Flagella help in locomotion of cell. तो cell रू बाहर थिबा ए hair like structure को कहंदी flagellum. Prokaryotic cell रो flagellum अछि eukaryotic cell रो flagellum अछि. तो prokaryotic cell रो flagellum composed of only one protein thread. गुटे flagellum गुटिए protein thread. Prokaryotic cell गुटिए flagellum मात्र गुटिए protein thread. किंतु eukaryotic cell flagellum composed of 9 plus 2 11 fibrils. ये eukaryotic cell flagellum गुटे flagellum रे एमिति 1 2 3 11 fibrils होचन 11 fibrils. से fibril means fine thread composed of protein. Fibril means fine thread सरुआ सूता. तो eukaryotic cell गुटे flagellum
यूकारियोटिक सेल जो फ्लाजेलम कंपोज्ड ऑफ 11 फाइब्रिल्स 11 फाइब्रिल 1 2 3 एंड 11 फाइब्रिल अरेंज होइतिबे 9 फाइब्रिल पेरिफेराली 2 फाइब्रिल इन सेंटर टोटल 11 फाइब्रिल्स अरेंजमेंट इज 9 प्लस 2 9 फाइब्रिल थिबे चारि पटरे पेरिफेराली 2 फाइब्रिल्स थिबे सेंटर रे किंतु प्रोकैरियोटिक सेल ऑफ फ्लाजेलम कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 फाइब्रिल ओके तो इट इज ऑल अबाउट बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल तो रिमाइंड कर दूं देखो वायरस बाद ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी कंपोज्ड ऑफ टिनी लिविंग यूनिट्स कॉल्ड सेल्स वायरस बाद सब लिविंग ऑर्गेनिजम मान बॉडी सान सान लिविंग यूनिट रे तैयारी ताको कहते सेल सेल इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स सेल दी प्रकार प्रोकैरियोटिक सेल इन ओडिया प्राक्न्योस्टियो कोष एंड यूकैरियोटिक सेल तो जो सेल रो न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा न्यष्टि झिल्ली नहीं नी न्यष्टि नहीं न्यूक्लियस पोर्शन ले केवल नेकेड डीएनए अछि त कोंदी प्रोकैरियोटिक सेल जो सेल रो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अछि न्यूक्लियर लॉस अछि न्यूक्लियस भीतर थिबा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन सहित मिसिकी क्रोमोसोम हेछि जो सेल न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा न्यष्टि झिल्ली अछि नी न्यष्टि अछि त कोंदी यूकैरियोटिक सेल रो मेम्ब्रेन बाउंड यूकैरियोटिक सेल रो साइटोप्लाज्म बा कोष जीव करे झिल्ली द्वारा आवृत अंगिका बा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड इसब अछि यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल नाही उभय सेल राइबोसोम अछि राइबोसोम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ सेल रो सब स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल राइबोसोम इज ए सॉलिड पार्टिकल राइबोसोम हैज नो मेम्ब्रेनस कवरिंग राइबोसोम रो कोनोसी मेम्ब्रेन रो कवरिंग नाही इट इज ए सॉलिड और निदा पार्टिकल राइबोसोम इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स the ribosome which sediments in centrifuge machine in 70 something speed is called 70s ribosome जो ribosome रो sedimentation coefficient जो ribosome टा centrifuge machine रे rotate कला बेले 70 something speed रे sedimentation करबा बसी जाए ता कोन 70s ribosome जो ribosome 80 something speed रे centrifuge machine रे sedimentation करे ता कोन 80s ribosome मन रखिबो सेल रो डिफरेंट ऑर्गेनेल सेल रो जो विभिन्न लिविंग ऑब्जेक्ट बा ऑर्गेनेल होचंदी सेमान को सेपरेशन करा जाए गोटे मशीन द्वारा से मशीन ना सेंट्रीफ्यूज मशीन तो सेंट्रीफ्यूज मशीन रे सेल को हमें रप्चर करेगी बस्ट करेगी फाटेगी जो सेल को रोटेट करेगा तो प्रोकैरियोटिक सेल रो राइबोसोम गुडी को 70 समथिंग स्पीड रे सेडिमेंटेशन कर जांदी पृथक हे जांदी सेपरेट हे जांदी बसी जांदी किंतु यूकैरियोटिक सेल रो राइबोसोम 80 समथिंग स्पीड रे सेडिमेंटेशन करते बसंती तो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को 70s राइबोसोम यूकैरियोटिक राइबोसोम को 80s राइबोसोम ओके प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को 70s राइबोसोम पुनी देखो ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट्स गोटे राइबोसोम रो दीटा सब यूनिट अछि दीटा खंड अछि एटा गोटे राइबोसोम तार दीटा सब यूनिट जेमति मार्कर दीटा सब यूनिट सिम राइबोसोम रो दीटा सब यूनिट गोटे लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम रो लार्ज सब यूनिट 50 समथिंग स्पीड रे सेडिमेंटेशन करे ता कोन 50 सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट ता 30 समथिंग स्पीड रे सेडिमेंटेशन करे ता कोन 30 सब यूनिट किंतु यूकैरियोटिक राइबोसोम रो लार्ज सब यूनिट ता 60s स्मॉल सब यूनिट ता 40s तो गुटे राइबोसोम रो दीटा सब यूनिट तो इट इज ऑल अबाउट बेसिक आईडिया अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल आउ डिफरेंस देखो प्रोकैरियोटिक सेल फ्लाजेलम रे फाइब्रिल अरेंजमेंट हला 1+0 किंतु यूकैरियोटिक सेल फ्लाजेलम रे फाइब्रिल अरेंजमेंट हला 9+2 यूकैरियोटिक सेल गुटे फ्लाजेलम रे 11 फाइब्रिल मीन्स फाइन थ्रेड अति सरुआ सूता तो यूकैरियोटिक सेल गुटे फ्लाजेलम 11 फाइब्रिल तैयारी एवं से फाइब्रिल अरेंजमेंट होची 9+2 9 फाइब्रिल थिबे पेरिफेराली 2 फाइब्रिल थिबे सेंटर रे ओके ना तो बाबू लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेल दी प्रकार प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल the organisms which have prokaryotic cells the organism whose body composed of prokaryotic cell are called prokaryotes the organisms whose body composed of eukaryotic cells are called eukaryotes जो ऑर्गेनिज्म रो बॉडी रे केवल प्रोकैरियोटिक सेल अछि जो ऑर्गेनिज्म रो बॉडी केवल प्रोकैरियोटिक सेल तयारी तान कोनी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बा प्रोकैरियोट्स जो ऑर्गेनिज्म रो बॉडी यूकैरियोटिक सेल तयारी तान कोनी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बा यूकैरियोट्स ओके तो नेचर रे थिबा ऑर्गेनिज्म भितरु थ्री
group of organisms are prokaryotic in nature. They are bacteria, blue green algae, and mycoplasma. These are prokaryotic organisms. All other organisms except bacteria, blue green algae, and mycoplasma are eukaryotic. केवल तीन प्रकार organism prokaryotic से माने bacteria, blue green algae, bacteria in urea बीजाणु, blue green algae, नीलहरित शैवाल और cyanobacteria. These are otherwise known as cyanobacteria. नीलो बीजाणु, cyanobacteria and mycoplasma. These are eukaryotic organisms, hence they belong to kingdom Monera. All other living organisms including protozoa, amoeba, animals, different plants, different green algae, red algae, brown algae, all are eukaryotic. Only 3 different group of organisms are prokaryotic. They are bacteria, blue green algae, mycoplasma. Remember, R.H. Whittaker in his classification system includes all prokaryotic organisms in a single kingdom, that is Monera. So kingdom Monera includes all the prokaryotic organisms. They are bacteria, blue green algae, mycoplasma. So let us further discuss about the characters of kingdom Monera. The members of kingdom Monera are unicellular and prokaryotic. A point बुझी पार्थुओ. Kingdom Monera सब organism गुड को usually unicellular and prokaryotic means kingdom Monera ର member गुडी को पूरा बॉडीटा गुटिया सेल एवं ताको सेल भीतर देखो ट्रू न्यूक्लियस नाही अर्थात न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं न्यूक्लियर लॉस नहीं न्यूक्लियस पर्सन केवल नेकेड डीएनए अछि ए डीएनए गुडी को हिस्टोन प्रोटीन सहित मिसी क्रोमोसोम हे नाती ए डीएनए गुडी को जेनेटिक मटेरियल बा जीन देखो किंगडम मोनेरा रो मेंबर गुडी को all the members of kingdom Monera are unicellular means their whole body is a cell and they are prokaryotic means ताका सेल भीतर ट्रू न्यूक्लियस नहीं माने न्यूक्लियस रो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट nuclear loss is absent and inside the nucleus only naked histone free DNA is present which is the genetic material. Membrane bound organelles जो mitochondria Golgi bodies these are totally absent. So members of kingdom Monera are unicellular and prokaryotes. They are microorganisms means they can't visible to our naked eye. They are microorganisms. They can't visible to our naked eye. Then members of kingdom Monera possess cells and the outermost rigid covering of a cell is a cell wall. Cell outermost rigid covering of cell wall konde below the cell wall cell membrane is present. Cell membrane is present. देखो कि Monera kingdom रो member मान करो cell wall composed of peptidoglycan or mucopeptide. गोटे पॉइंट मन रखियो किंगडम Monera रो सब मेंबर मानकर सेल रो सेल वॉल अछि माइकोप्लाज्मा रो सेल वॉल नाही माइकोप्लाज्मा इज द मोनेरान विदाउट सेल वॉल मन रखि दिबो माइकोप्लाज्मा इज द मोनेरान विदाउट सेल वॉल मींस माइकोप्लाज्मा रो सेल वॉल नाही तार केवल सेल मेम्ब्रेन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि आउटर कवरिंग भाबरे तो रिमाइंड कर दू देखो किंगडम Monera रो मेंबर मानकर पूरा बॉडीटा गुटिए सेल दैट मींस दे आर यूनिसेलुलर. They are prokaryotic means ताका cell भीतर true nucleus is absent means nucleus रो nuclear membrane is absent nuclear loss is absent DNA the genetic material is represented by naked histone free DNA that means a DNA histone protein से मिसी क्रोमोसोम है नहीं पुनी देखो cell भीतर कौन सी membrane bound organelles mitochondria Golgi bodies are totally absent only ribosomes are present and these ribosomes are 70S type ribosome. Okay, then kingdom Monera member मानकर cell wall is composed of peptidoglycan or mucopeptide. Peptidoglycan is a complex compound formed by peptides means amino acids and glycan means polysaccharide type of carbohydrate. Cell wall of Monera composed of peptidoglycan. Peptidoglycan is a complex of amino acid and carbohydrate. Peptides means amino acids. Glycan means polysaccharide type of carbohydrate. Peptidoglycan is otherwise known as mucopeptide or murine. Cell wall of Monera composed of peptidoglycan or mucopeptides. Then third point, flagella show 1+0 fibrillar arrangement.
किंगडम मोनेरा मेंबर मानकर फ्लाजेला ये सेल रु बाहर थिबा हेयर लाइक प्रोसेस को कहते फ्लाजेलम सिंगुलर फॉर्म में प्लूराल फॉर्म में फ्लाजेला प्रूकारियोट्स मानकर देख फ्लाजेलम केवल गोटे फाइब्रिल माने गोटे सिंगल थ्रेड रे तयारी हिची से थ्रेडटा प्रोटीन ले तयारी फ्लाजेलिन प्रोटीन ले तयारी मोनेरा मानकर फ्लाजेलम रे केवल गोटे फाइब्रिल बा थ्रेड अछि त माने फ्लाजेलम रे फाइब्रिल अरेंजमेंट हला 1+0 फोर्थ पॉइंट जेनेटिक मटेरियल or genes represented by only naked DNA. The DNA is not associated with the histone protein. Histone is one type of basic protein combines with the DNA to form chromosome in case of eukaryotes. Eukaryotes मानकर DNA histone protein सहित combine होगी chromosome हुए किंतु prokaryotes मानकर माने kingdom monera member मानकर ये DNA टा naked DNA histone नामक protein सहित combine है नहीं. Then fourth point पर देखो इटा fifth point इटा राइबोसोम इज 70s टाइप त माने प्रूकार्य जो किंगडम मोनेरा मेंबर मानकर सेल रो साइटोप्लाज्म रे राइबोसोम नामक जो ऑर्गेनेल जे प्रोटीन सिंथेसिस करे राइबोसोम से राइबोसोम दा सेंट्रीफ्यूज मशीन रे 70 समथिंग स्पीड रे सेडिमेंटेशन करे राइबोसोम इज 70s टाइप एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडीज आर टोटली एब्सेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स गोल्गी बॉडीज एटसेट्रा आर एब्सेंट ओके देन reproduction last point देखिए reproduction takes place only by vegetative and asexual method that means sexual reproduction is totally absent however in some monera such as in some bacteria genetic recombination takes place that means DNA or gene of one bacteria in some cases enters into the cell of other bacteria. Bacteria मानकर sexual reproduction is totally absent. Sexual reproduction हुए नहीं किंतु genetic recombination हुए means जन गुटे bacteria में DNA बा gene आउ गुटे bacteria में DNA बा gene से मिसे. तो it is all about the general characters of kingdom monera. Then example, kingdom monera includes 3 different type of organisms: bacteria, blue green algae, and mycoplasma. तो ये एग्जांपल हम डिटेल डिस्कशन करिया मैं आउट तो रिमाइंड कर दो देखो इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आरएच व्हिटाकर all the prokaryotic organisms such as bacteria blue green algae and mycoplasma are placed in a separate kingdom that is kingdom monera. Kingdom monera is the kingdom of prokaryotes. Monera term was introduced by Neely and Steiner. Kingdom monera includes all the unicellular prokaryotic organisms. नेचर रे ऑर्गेनिज्म भितर जो ऑर्गेनिज्म गुड यूनिसेलुलर एवं प्रोकार्योटिक जो ऑर्गेनिज्म रो सेल भितर केवल नेकेड डीएनए अछि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर लॉस नाही प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म सेमान रखा है किंगडम मोनेरा रे सेमान हेले बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलजी माइकोप्लाज्मा मोनेरा मानकर कैरेक्टर हैला जे सेमानकर सेल रो फ्लाजेलम गुटिए फाइब्रिल ले तयारी त माने फ्लाजेलम केवल गुटिए फाइब्रिल बा थ्रेड रे तयारी फ्लाजेलम रे फाइब्रिल अरेंजमेंट 1+0 देन सेमानकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर लॉस एब्सेंट डीएनए नेकेड डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से मिसी क्रोमोसोम हेनी देन सेमानकर राइबोसोम टा 70s टाइप सेल वॉल कंपोजिट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड लोकोमोशन यूजुअली डज नॉट टेक्स प्लेस लोकोमोशन बा चलन प्रक्रिया हुएनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली लैकिंग और एब्सेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुएनी रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय वेजिटेटिव माने अंगीय जनन एंड एसेक्सुअल मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टोटली एब्सेंट देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडीज आर टोटली एब्सेंट. So these are general characters of kingdom monera and examples are bacteria, blue green algae and mycoplasma. So let us discuss the examples of a kingdom monera. First, bacteria.